याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिया गया था, उसे खारिज करते हुए वो कह रहे हैं कि केंद्र राष्ट्रपति की भूमिका के तहत राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। Exists by which the state is subordinate to the Indian Constitution first and only then to its own constitution. 7. All states in the country have legislative and executive power, albeit to differing degrees. The Constitution accommodates concerns specific to a particular state by providing for arrangements which are specific to that state. Articles 371A to 371 वो ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र का लिया हुआ कोई अपरिवर्तनीय कार्रवाई, अपरिवर्तनीय फैसला नहीं किया जा सकता। ये दलील भी हम खारिज कर रहे हैं। The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. And 8. The limited question before the Constitution bench in its decision in Premnath Hall was whether the monarch held plenary legislative powers after the Constitution of India as it applied to Jammu and Kashmir was adopted in the state, but before the Constitution of Jammu and Kashmir was adopted. A decision is an authority for the proposition which it decides. The question whether the state of Jammu and Kashmir retains sovereignty upon integration with the dominion of India did not arise in that case. The next issue which we have addressed is the challenge to Constitutional Order 273, CO 273. To answer this issue, we had to decide on two issues. One, whether Article 370 is a temporary provision, and two, the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370. We have held that Article 370 ये भी कह रहे हैं चीफ जस्टिस कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान है उसमें संप्रभुता को लेकर कोई बात नहीं की गई है। There is a clear absence in the Constitution of Jammu and Kashmir to the reference of sovereignty. संप्रभुता के रेफरेंस को लेकर किसी तरह की बात नहीं कही गई है और ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। ये संविधान के आर्टिकल 1 और 370 से बिल्कुल साफ होता है। A temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ तो विलय के साथ जम्मू कश्मीर ने अपनी पूरी संप्रभुता छोड़ दी। ये बड़ी बात कह रहे हैं चीफ जस्टिस। विलय के साथ ही कश्मीर ने अपनी पूरी संप्रभुता छोड़ दी। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता भी नहीं थी और इसका संविधान भारत के संविधान के अधीन है।